So let us start. Okay, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. Okay, Cauchy's principle of convergence was this. So let me repeat it. It was if we take a real sequence, जो हमारा theorem था वो ये था. You have a sequence, a real sequence, a sequence of real numbers. Let's call, as we noted by a n runs from 1 to infinity, converges more or less this stuff, if and only if, or the necessary and sufficient condition for a sequence to converge is that for any epsilon positive, there exists some natural number n naught such that a n minus a m is less than epsilon for all n m bigger than or equal to n naught. तो दिस वाज द कंडीशन. और मैंने कहा था ये फर्क है उससे कि जो कन्वर्जेंस की लिमिट यही डेफिनेशन है, बट वी हैव गॉट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिगर देन इक्वल टू एन नॉट, क्योंकि यहाँ हमें पहले लिमिट पता होना चाहिए. तो यहाँ हमें लिमिट पता हो ना हो, वी कैन चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए sequence whether we know what it converges to or not by this Cauchy's principle, Cauchy's general principle of convergence. ओके और मैंने कहा था इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस इज द सेम. इसी स्टेटमेंट को कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं बिकॉज इट्स यूजफुल टू in certain cases it becomes easier to use this form of the same condition. तो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले दिखाया था अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस एन कन्वर्जेस, ये हमने किया था, इट इंप्लाइज दैट दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन होल्ड्स. ये हम कल कर चुके हैं. और फिर हमें करना था बेसिकली, अगर एक कंडीशन ट्रू है फॉर अ सर्टेन सीक्वेंस, कंडीशन अगर होल्ड करती है तो उसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी वर प्रूविंग. उसका हमने आधा प्रूव किया. हमने दिखाया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, लेट मी कॉल इट कंडीशन स्टार, यानी अगर दिस कंडीशन इज ट्रू, देन हम पहुंच के थे कि हमने दिखा दिया कि ए एन इज बाउंडेड. यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन दिस सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड. लेकिन हमें दिखाना है ये कन्वर्ज करती है. तो वंस आई डिड दैट कि ये बाउंडेड, हम कल पहुंच चुके हैं यहाँ तक. ओके, so then I can show that by Bolzano-Weierstrass theorem, every bounded sequence has at least one. Which sequence say an and runs from 1 to infinity has at least one limit point. Say हमने उसका नाम दिया था L. तो हम दिखाएंगे एक्चुअली ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इस L को. तो once we show that, तो हमारा ये प्रूफ इसका कंप्लीट हो जाएगा. Now we show that an converges to L. ये हम इसमें बाकी रह जाएगा प्रूव करना, जो हम अभी करेंगे प्रूव. Converges to this limit point, जो इसका होगा कोई. Okay, so let's move ahead to show that it converges. Okay, now what we do is this. By given condition, जैसा कि हमें पता है given condition क्या है, ये जरा erase करता हूँ. By given condition, let me write it down once again. By given condition,
गिवन कंडीशन क्या है? For any epsilon positive, there exists some n naught belonging to the set of natural numbers such that modulus of an minus am is less than epsilon for all n m greater than or equal to n naught. Now, this is the given condition. अब चूंकि है epsilon is an arbitrary positive number, any positive number, so is epsilon by 3. मैं यहाँ बजाय इसके epsilon by 3 यूज करूंगा, राइट? अब हम इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? now since if L is a limit point of the sequence, limit point, or should I write it like this? हाँ, मैं इसको थोड़ा और करूंगा इस तरह से. Let me यहाँ रख देता हूँ. इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ. In particular, an minus an naught is less than epsilon by 3 for all n bigger than equal to n naught. क्योंकि m और n का वैल्यू, ये कंडीशन किन के लिए ट्रू है? जब भी m और n का वैल्यू n नॉट या उससे ज्यादा है, तो अगर मैं इन पर्टिकुलर n नॉट लूंगा m की जगह, तब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. सो इट्स epsilon by 3 here. So let's call this equation 1. Okay, now since if L is a limit point, जो कि हमें पता है of the sequence, इसका कोई ना कोई limit point तो है ही. मान लो L है limit point of the sequence n runs from 1 to infinity, then there exists a positive number. There should exist a positive integer, a natural number या positive integer, बात एक ही है. n1 bigger than n naught such that a n1 minus L is less than epsilon by 3. देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा, इसके मतलब, क्योंकि हमें पता है L अगर लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि every neighborhood of L contains infinitely many numbers, contains infinitely many terms of the sequence. Of the sequence an, any neighborhood. Let me call it like this. तो हर कोई नेबर, इन पर्टिकुलर ये नेबरहुड L minus epsilon by 3, L plus epsilon by 3, it must contain infinitely many points of the sequence. तो हमेशा तुम्हें n नॉट से बड़ा कोई ना कोई n1 ऐसा मिलना चाहिए such that this is true. क्योंकि अगर n नॉट से कोई भी बड़े के लिए ये ट्रू नहीं है कि वो इस नेबरहुड का हिस्सा है, तो इस नेबरहुड में उसका मतलब ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे. क्योंकि उसमें इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं, तो देयर शुड एग्जिस्ट आफ्टर अ फाइनाइट स्टेज एटलीस्ट वन, इनफैक्ट मोर देन वन, इनफैक्ट इन्फिनिटली मेनी such indices such that an1 minus L is less than epsilon by 3. So let's call this equation second. Furthermore, what I do now, since अब मैं ले रहा हूं कि n1 is bigger than n0, उसका मतलब ये भी है कि an1 minus an0 is less than epsilon by 3, because from first, look, this is true for all n bigger than equal to n0, so n1 is bigger than n0, तो मैं n की जगह यहाँ n1 substitute कर सकता हूँ. So let's call this equation third. अब हम इन तीनों को combine करके we show that an converges to L. Now अगर मैं अब लेता हूँ, now an minus L is the same thing as modulus of an minus an naught plus an naught minus an1 plus an1 minus L.
मैंने an नॉट ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, so we exactly हमने कुछ मतलब we added nothing, so it is the same. Now using the triangle inequality, and this is less than equal to an minus an naught plus an naught minus an1 plus an1 minus l. अब ये तीन मॉडल आए, तीन नंबर्स आ गए. अब अगर मैं by first, this is less than epsilon by 3 for all n bigger than equal to n naught. By third, this is less than epsilon 3. By second, this is also less than epsilon by 3. So this is, मैं यहाँ लिख देता हूँ, less than epsilon by 3 plus epsilon by 3 plus epsilon by 3 for all n bigger than equal to n naught by first, second, and third. Which implies that modulus of an minus l is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught. That's we have found. We have found epsilon was arbitrary. We have found that for any epsilon positive, there exists this n naught belonging to the set of natural numbers such that an minus l is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught, which is precisely the definition of the convergence of a sequence. Therefore, this sequence n runs from 1 to infinity, converges to this limit point to l. So अब हमने दिखा दिया, a sequence converges if this condition is true. That is जो हमने किया. तो हमारा जो theorem था, Cauchy's general principle of convergence, we have proved this. Now we use a definition of a Cauchy sequence. So let me write it down. Cauchy sequence को हम define करेंगे. Cauchy sequence का मतलब जो ये condition हमने इस theorem में रखी, which is equivalent to the sequence being convergent, जो sequence इस condition को satisfy करती है, उसको हम कहते हैं Cauchy sequence. Now a sequence, let me write it down. A sequence is said, let me call this some name. A sequence an and runs from 1 to infinity is said to be a Cauchy sequence if for any epsilon positive, any positive number, there exists n naught belonging to natural numbers such that modulus of an minus am is less than epsilon for all n comma m bigger than equal to n. So or इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, an plus p minus an is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught and p bigger than equal to 1. So ये दोनों ही तरीके हैं इसको लिखने के, इस कंडीशन को. तो therefore जो Cauchy's general principle of convergence है, उसको हम ऐसे, अब चूंकि हमारे पास ये definition है, it is exactly the condition which we showed in the last theorem will be satisfied if the sequence is convergent, and if this condition is satisfied, then the sequence converges, and vice versa. It is equivalent to the convergence condition. So therefore, the remark में हम लिख सकते हैं, ये जो Cauchy's general principle of convergence है, after this definition, general principle of convergence can be stated after this definition
as a sequence is convergent if and only if it is Cauchy. If and only if अगर कोई sequence Cauchy है तो convergent है तो Cauchy है. This need not be true always. So for real sequences, this is always true. For the field of real numbers, this is always true. But this needs not be true in the case of a general topological space or a metric space even. लेकिन वो तुम आगे पढ़ोगे. अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है, सपोज मैं दिखा दूं कोई सीक्वेंस Cauchy है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी और मुझे उसका लिमिट पता हो ये जरूरी नहीं है. इससे पहले हमने जो भी किया, हमें पहले लिमिट पता होता था जब हम कन्वर्जेंस सर जो हमने अभी ली ना सीक्वेंस ए एन, हाँ बताओ. तो ये बाउंडेड है. फिर हमने लिया कि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, लेकिन हमें कैसे पता कि एक ही लिमिट पॉइंट होगा? हमने कहा एक लिमिट पॉइंट कम से कम होगा, एक ही नहीं लिया. सर अगर दो होंगे तो ये दो दो तो हो ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि नहीं, दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने दिखा दिया वो कन्वर्ज करती है. अब वंस वी शो दैट इट इज कन्वर्जेंट, हाँ बोलो. हमें दिखाना मतलब ये कन्वर्जेंट है. हाँ, वंस वी शो दैट, पहले नहीं, एक बार हमने दिखा दिया ना ये कन्वर्ज, हमने ये दिखा दी ना ये कंडीशन जो आप बोर्ड पे आप दिख रहा है. अब वंस मैंने ये दिखा दिया ना कि ये कंडीशन, देन ये जो एल है अब ये एक ही होगा और इसका लिमिट होगा. यहां तक हम कह सकते थे. मैंने लिखा होगा ए लिमिट पॉइंट लिखा ना मैंने इससे पहले, इफ एल इज ए लिमिट पॉइंट, है ना. ए का मतलब क्या हुआ कि मतलब ए कोई एक, तो मैंने नहीं लिखा था यानी एक ही है. मैंने लिखा मान लो अगर एक ही है तो एक ही भी अगर होगा तो वो सीक्वेंस उसी को कन्वर्ज करेगी. उसका मतलब ये होगा कि वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिमिट है वो यूनिक होता है. ठीक है. यस सर. ठीक है, ओके. तो वंस हमने कन्वर्जेंस के बाद वो तय हो गया. तो मैं क्या कह रहा था, वंस हमें ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस मिला तो हमें, अगर हमें उस सीक्वेंस के लिमिट के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता हो, फिर भी हम चेक कर सकते हैं अंडर दिस कंडीशन. अगर हम देखें वो Cauchy है कि वो क्या बोलते हैं कन्वर्ज करे. जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सो लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट. A and B 1 plus 1 by 2 plus so on and so forth 1 by n. मेरे कहने का मतलब है, जब मैं a n को ऐसे लिखता हूं, मेरे कहने का मतलब है पहली टर्म इस सीक्वेंस की 1 है, दूसरी टर्म इसकी 1 plus 1 by 2 है, तीसरी टर्म इसकी 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 है. इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती है और इसकी nth टर्म जो है इन जनरल वो है 1 plus 1 by 2 so on and so forth up to 1 by n. अगर ये सीक्वेंस है तो अगर हमें चेक करना है कि ये Cauchy है, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये सीक्वेंस क्या कन्वर्ज करेगी, मतलब डज इट कन्वर्ज टू सम नंबर, राइट. तो बजाय इसके कि हम इसका लिमिट ढूंढे, हम दिखाएंगे ये सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस नहीं हो सकती. तो अगर हमने दिखा दिया कि ये Cauchy सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी और हमें लिमिट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो हम कहेंगे चलो हमें लेट दिस बी, मतलब द क्वेश्चन इज डज द सीक्वेंस n runs from 1 to infinity converge. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे suppose it converges. Suppose it converges. तो ये हम कह रहे हैं, ऊपर हमने लिखा है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये Cauchy भी होगी. So suppose it converges, then it must be Cauchy. It must be a Cauchy sequence. तो Cauchy sequence का मतलब क्या है? Then for any epsilon, right, there must exist a natural number n such that an minus am is less than epsilon for all n m bigger than or equal to n naught. This is the condition. ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूं,
मैं ले सकता हूं ना, टेकिंग मतलब आई कैन टेक एनी एप्सिलॉन टू चेक दिस कंडीशन. सो टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1 by n, चलो नहीं 1 by 2 लेते हैं. चलो टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1 by 2 and m equal to 2n, right? Then I should get, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैं ऐसे अब लिखूंगा, मैं am को पहले लिखूंगा, doesn't matter क्योंकि माइनस, क्योंकि मॉडुलस है. So then I should have, then मैं कह सकता हूं then a2n minus an in modulus should be less than 1 by 2 for all n bigger than equal to n naught. Of course n अगर n naught से बड़ा है तो 2n भी उससे बड़ा होगा, so I didn't write that. तो this should be true. Shouldn't this be true? अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये कोशी होना चाहिए, तो फिर ये भी सच होना चाहिए, और हम दिखाएंगे ये कभी सच नहीं हो सकता. Now what is a2n? a2n होगा 1 plus 1 by 2 plus so on and so forth plus 1 by n, मतलब हमें जाना होगा 2n तक. So 1 by n plus 1 plus so on and so forth plus 1 by 2n. Or what is an? An is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by n. और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so a2n minus an बराबर होना चाहिए 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus so on and so forth 1 by 2n. तो ये हम नेक्स्ट पेज पे मैं लाऊंगा, राइट? सो मॉडुलस of a2n minus an is equal to mod of 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by 2n. Now this is all positive, so I can just मैं mod को हटा सकता हूँ, right? Now, but this is bigger than 1 by 2n plus 1 by 2n plus so on and so forth plus 1 by 2n. क्यों? क्योंकि n plus 1 जो है वो less than 2n होगा, right? Which means that 1 by 2n is less than, या उल्टा मैं करूंगा, 1 by n plus 1 is bigger than 1 by 2n. इसी तरह से 1 by n plus 2 भी होगा in general bigger than 1 by 2n. और ये सारे की सारी टर्म्स बिगर देन 2n होगा, लास्ट वाली बराबर होगी, बट इनइक्वालिटी फिर भी मैं लिख सकता हूँ बिकॉज क्योंकि बाकी टर्म्स तो बड़ी हैं, ये तो खैर बराबर है, लेकिन इन जनरल ये इससे बड़ा होगा. ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, लेकिन ये तो n टर्म्स हैं, सो इट इज एक्चुअली n times 2n, n times 1 by 2n, so that's equal to 1 by 2. So therefore हमें मिला a2n minus n is bigger than 1 by 2 for all n, right? तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी कोशी कंडीशन को. इसको अगर मैं 1 लिखूं, now which is a contradiction to 1, which is a contradiction to 1, hence this sequence जो हमने ली थी is not Cauchy and therefore not convergent. ठीक है, तो ये convergent नहीं हो सकती. तो यहाँ पे हमने Cauchiness चेक की, that is sufficient to show that it's not convergent. Now इसके बाद जो हमने हाँ हाँ पूछो, हाँ बोलो सर. अगर हम एप्सिलॉन कोई और लेंगे, अगर एक एप्सिलॉन के लिए देखो फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन दिस शुड बी ट्रू. लेकिन अगर मैंने इसका मतलब अगर मैंने एक के लिए भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स, क्योंकि कंडीशन यही कहता है कि हर किसी पॉजिटिव नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए. तो अगर ये एक के लिए भी फॉल्स निकला तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती. मेरी बात समझ में आई? ओके सर, ठीक है.
क्योंकि कंडीशन में लिखा है Okay, किसी okay. भी एप्सिलॉन के लिए, यानी अगर एक के लिए भी फॉल्स हो गया वे आर डन। तो हमने दिखाया ये 1/2 के लिए फॉल्स है, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज द कंडीशन सेज कि हर एक एप्स, इसी तरह से कन्वर्जेंस के लिए भी हमने किया था एक दो बार, अगर एक भी एप्सिलॉन के लिए वो कंडीशन वैलिड नहीं है तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। अब इसके बाद मैं चाहूंगा ये तुम खुद करो, ऑल्दो इट्स मतलब इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस, इट इज रादर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जो तुमने किया होगा इससे पहले भी। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि इफ n runs from 1 to infinity and n runs from 1 to infinity are two convergent sequences, अगर ये converge करती है तो इनका sum product वो भी converge करेगा, convergent sequences, then I should write it, चलो मैं लिखता हूँ। Now limit as n approaches infinity, an plus minus pn is always equal to limit n approaches infinity, an plus minus limit n approaches infinity, pn। इसका मतलब हुआ कि अगर ये दो कन्वर्ज करेगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करने का मतलब होगा उन दो सीक्वेंसेस का पॉइंट वाइज सम। पॉइंट वाइज सम मींस अगर मैं a1 को b1 के साथ ऐड करूं, a2 को या सब्ट्रैक्ट करूं, तो वो भी कन्वर्ज करेगा। एंड सिमिलरली लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, उनका प्रोडक्ट an into bn would be equal to limit n approaches infinity an into limit n approaches infinity bn, provided both converge. And third one, limit an divided by bn is equal to limit of an by bn, sorry, yani limit n approaches infinity an divided by limit n approaches infinity bn, provided this denominator is not 0, that's obvious, provided limit bn as n approaches infinity is not equal to 0. So ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, पूरी कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, बट इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे तुमने किया होगा फंक्शंस के लिए लिमिट थ्योरम्स, बिल्कुल वैसे ही जाता है। मैं चाहूंगा तुम्हें करो, राइट। फर्दर मोर एक और मुझे ऐड करना चाहिए, if c is any real number then limit n approaches infinity can is equal to c into limit n approaches infinity an। यानी अगर हम किसी नंबर से थ्रू आउट सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करें, अगर पहली वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करती थी तो ये भी कन्वर्ज करेगी। मेरे कहने का मतलब है हमें पता है ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, an runs from 1 to infinity where an is equal to 1 by n। ये सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3 और हमें पता है ये कन्वर्ज करेगी 0 को। अगर मैं इसको थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 into 1 लूं, फिर लूं 2 into 1/2, 2 into 1/3, ये कन्वर्ज करेगी 2 into 0 को, जो कि 0 ही है, लेकिन कन्वर्ज ये भी करेगी। या किसी भी फाइनाइट नंबर से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मतलब ये कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं एक सीक्वेंस an is equal to 1 by n, दूसरी सीक्वेंस में लेता हूं कुछ और सीक्वेंस लें, लेट मी कॉल दिस 1 plus 1 by n raised to power n, चलो लेट्स कॉल दिस pn। अब ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है, हमने नहीं दिखाया अभी इसका कन्वर्जेंस, लेकिन करेंगे, हाँ दिखाया था शायद। ओके, सो bn है, ये कन्वर्ज करेगी an करेगी, तो जो ये an plus bn है, यानी मेरे कहने का मतलब है इसकी पहली टर्म अगर मैं मतलब ऑफ कोर्स दिस सीक्वेंस क्या है, ये तो है, ये सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, राइट। और ये सीक्वेंस जो दूसरी है ये है 1 plus n को 1 देंगे तो
2 है पहला इसका टर्म, राइट, देन है 3 प्लस नहीं 1 प्लस 1, तो इट वुड बी 1 plus 1 by 2 whole square, then 1 plus 1 by 3 whole cube, so on and so forth. अब अगर मैं दूसरी सीक्वेंस बनाऊं, यानी अगर मैं बनाऊं 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 by 2 का स्क्वायर, 1 by सॉरी 1 by 2 होना चाहिए पॉइंट वाइज, यानी इसको इसके साथ ऐड, पहली टर्म को पहले के साथ, तो एक और सीक्वेंस बन जाती है. So I would have 1 by 3 plus 1 plus 1 by 2, sorry 1 by 3 cube, so on and so forth. तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इसके लिमिट को प्लस इसके लिमिट को, जो कि हम दिखाएंगे है समथिंग 2.714. तो इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए अगर सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है तो उनके अलजेब्रा जो है वो नाइस होता है, मतलब वी कैन जस्ट डू इट, मतलब सेपरेटली उनके दो लिमिट्स लगाओ, जो सम का लिमिट होगा वही मतलब उन लिमिट्स का सम होगा. ओके, सो ये मैं खैर तुम पे छोड़ता हूँ. वैसे एक, अगर मैं इसको तुम फिर से ज्वाइन करना, आज लाइट है, अभी ये शायद खत्म हो जाएगा 2-4 मिनट में, तो तुम सारे फिर से ज्वाइन करोगे. आज हम दूसरा भी इसको थोड़ा सा और आगे ले जाए, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं. ओके, सो हम फर्दर कुछ रिजल्ट्स करेंगे सीक्वेंसेस के बारे में. उनमें पहला वाला हम करेंगे, लेट्स डू दिस, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, एक छोटा सा थ्योरम, सो लेट n runs from b1 to infinity be a sequence such that इसकी सभी टर्म्स नॉन नेगेटिव है. an is greater than equal to 0 for all n. इसकी सभी टर्म्स जो है वो नॉन नेगेटिव है, and it converges, and limit n approaches infinity, an is some number a, यानी ये कन्वर्ज करती है. देन हम प्रूव करेंगे ये जो इसका लिमिट है वो भी नॉन नेगेटिव होगा, मतलब वो नेगेटिव नहीं, अगर इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो इसका लिमिट भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब नॉन नेगेटिव ही होगा. प्रूफ बड़ा इसका इजी है. assume to the contrary it's negative, right? Now let if possible, दिखाएंगे उससे कॉन्ट्रडिक्शन आए. a is negative, हमें दिखाना है इसका लिमिट भी नॉन नेगेटिव. Now by the definition of convergence, for any epsilon positive, there exists n naught belonging to the set of natural numbers or positive integers, whatever, such that modulus of an minus a is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. और इसको हमने दिखाया है, इसका मतलब ये है कि an is bigger than a minus epsilon, which is less than a plus epsilon for all n bigger than equal to n naught. अब एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, सो वी चूज, यहाँ पर हम एक चॉइस लेंगे एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन इक्वल टू लेट्स कॉल इट -1/2a, which is positive. Why? Because a हमने नेगेटिव माना है, तो इसका नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है. सो एप्सिलॉन अगर मैं ये लेता हूँ तो इट्स वैलिड. सो इट इंप्लाइज देन आई मस्ट हैव a minus epsilon, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2a is less than an is less than a minus 1/2a for all n greater than equal to n naught. But that implies that an is less than 1/2a for all n greater than equal to n naught. लेकिन ये तो a नेगेटिव है, तो 1/2a भी नेगेटिव होगा. So it means that then an must be negative for all n greater than equal to n naught. हम कह रहे हैं फाइनाइट को छोड़ के सारी की सारी टर्म्स इसकी नेगेटिव आ जाएंगी, लेकिन हमारा तो कह रहा है ये सारी नॉन नेगेटिव है. So which is a contradiction.
which is a contradiction to our condition, yeah, our supposition, since an is greater than or equal to 0 for all n. So therefore, a must also be greater than or equal to 0. ओके, एक और थ्योरम हम कर सकते हैं जो इसी से बेसिकली मिलता जुलता है। वो ये होगा कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस है जो कन्वर्ज करती है, now let n runs from 1 to infinity and n runs from 1 to infinity be two sequences such that an minus bn, sorry, an is less than or equal to bn for all n greater than or equal to n, for all. If this is true for all n, यानी सारी टर्म्स, यानी मेरे कहने का मतलब है a1 b1 से लेस है, a2 b2 से लेस है, हर कोई इंडिविजुअल टर्म पहली से दूसरी से, मतलब ये रिलेशन है उनका, one is less than equal to the other, and limit n approaches infinity, an is equal to some a, and limit n approaches infinity, bn is equal to some b. तो अगर इनके लिमिट है तो उनमें भी ये रिलेशन होगा, यानी then a would also be less than equal to b. प्रूफ इसका सिंपल है, एक तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, दूसरा बड़ा सिंपल है। एक सिंपल ये हो सकता है, लेट cn be equal to bn minus an, देन इससे एक और सीक्वेंस बन गई, so this would be greater than and equal to 0 for all n, है कि नहीं? क्योंकि व्हाट, ये इससे लेस है तो b इससे बड़ा है, तो बड़े से छोटा करेगी तो नॉन नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल n. सो बाय प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है? बाय प्रीवियस थ्योरम इसका लिमिट जो होगा, बाय प्रीवियस थ्योरम लिमिट, चलो आज जितना ही करते हैं, वैसे अब लेस देन 1 मिनट है, ये कल ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सो लेट मी स्टॉप इट हियर, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा, कितने आए हैं? 34 अटेंडेंस तुम रखना, जो आपका सीआर है वो अटेंडेंस रखेगा, ओके? कल हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, कल 2 क्लासेस लेंगे, 40-40 मिनट में नहीं होता है ठीक से। ओके, खुदा हाफिज़।